स्प्रिंग्स इस्तेमाल करते हैं वाइब्रेशन आइसोलेट करने के लिए, या इस तरह आइसोलेशन पैड्स अक्सर आपने ब्रिजेस में देखे होंगे। कुछ किसी और सिचुएशन में हो सकते हैं हम ये इस्तेमाल ना कर सकते हो, वहां पे ये दो जो हैं इसमें से कोई जो प्रॉपर है वो आइसोलेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इससे वैरायटी ऑफ आइसोलेटर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। The material which is used for isolators are normally natural or artificial rubber, cork pads, this special material which is similar to the sponge or cloth से related आपने देखा होगा. This is known as felt and metallic springs. Here an example is given where metallic springs are provided in machines, and these metallic springs reduces the vibrations produced by the machines. Consequently, lesser vibrations are transmitted in the below direction. Here another example of vibration isolator is shown. You can see this red color. This is basically a special type of rubber which is used in below the railway sleepers in Germany. The properties of this material is such that it reduces the dynamic forces transmitted to the ground surface. जब इसके ऊपर रेल गुजरती है वो डायनामिक फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब अप्लाई करती है तो ये मटेरियल उन हार्मोनिक फोर्सेस उन फोर्सेस को रिड्यूस कर देता है। कॉन्सिक्वेंटली नीचे जो मटेरियल है बैलेस्ट उस पर डिमांड कम हो जाता है और आप रिलेटिवली इंफीरियर क्वालिटी टाइप ऑफ मटेरियल वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Similarly, you may have seen elastomeric rubber bearing pads in bridges. Usually, these are provided between the bridge piers and the girders which supports the deck. And the purpose of these elastomeric rubber pads is to reduce the dynamic forces exerted by the moving traffic to the pier. Now we come to some mathematical. Now we will discuss the mathematics of vibration isolators. So consider a typical mass spring and dash part system. A harmonic force is acting in the vertical direction represented by the this function P naught sin omega t. P naught is the amplitude of harmonic force. Omega is the frequency of harmonic force. And let Ft is the force transmitted at the base. If there is no vibration isolator provided, then Ft is simply equal to P of t. But if we provide proper isolation system, we can reduce Ft and consequently less force is transmitted to
the support. अच्छा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पर एक सेक्शन ले रहा हूँ और फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन दोनों का ड्रा कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन है, ये सेक्शन लाइन से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। हार्मोनिक फोर्स की वजह से स्प्रिंग में इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी और डैश पार्ट में डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। और अगर नीचे वाले पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ले लें तो उस पोर्शन में जो स्प्रिंग और डैश पार्ट पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगी उनकी मैग्नीट्यूड यही होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। और एफ टी जो है नीचे बेस पर जो फोर्स ट्रांसमिट होगी ये वो है। अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम कंसिडर करें इस फ्री बॉडी डायग्राम की, तो वी हैव थ्री फोर्सेस और इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमारे पास एफ एस प्लस एफ डी जो है एफ टी के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आती है कि एफ टी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। पी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ harmonic force and ft naught is the corresponding force transmitted to the base. So the ratio of ft naught by p naught is represented by tr and this is called transmissibility. And by solving this equation we get the expression shown in the square root. So, for a better isolation system, I am asking you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, उसके जवाब आप दें। As an engineer, अगर आपको आइसोलेशन सिस्टम डिजाइन करने के लिए कहा जाए तो आप टी आर की क्या वैल्यू आप जो है अचीव करना चाहेंगे? 1 या 1 से ज्यादा या 1 से कम? जवाब दे इसका। सर 1 से कम। 1 से कम बिकॉज हम चाह रहे हैं कि जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है नीचे वो ऊपर वाली हार्मोनिक फोर्स से कम हो। तो लिहाजा एज एन इंजीनियर अगर हम एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, चूंकि हमारी ख्वाहिश होगी कि ट्रांसमिटेड फोर्स जो है वो हार्मोनिक फोर्स से कम हो, तो लिहाजा टी आर की वैल्यू हमारी ख्वाहिश होगी कि कम 1 से कम होनी चाहिए। और जितनी इसको हम कम कर सकते हैं उतना ही जो है हम बेहतर आइसोलेशन अचीव कर सकते हैं। तो एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपका जो गोल होगा वो ये होगा कि ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर पीछे जो इक्वेशन गिवन है ये प्लॉट की गई है। वाई एक्सिस पे ये ट्रांसमिसिबिलिटी ली गई है और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी रेशियो ली गई है और डिफरेंट डैम्पिंग रेशियोज के लिए ग्राफ्स प्लॉट किए गए हैं। ये एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रेशियो, वाई एक्सिस पे ट्रांसमिसिबिलिटी और डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट किए गए। ये पिंक जो है दिस इज फॉर डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.01 और ये
जो दूसरा नीचे जो वायलेट कलर है ये 0.05 के लिए, इसी तरह 0.1, 0.2 और 0.5 के लिए ग्राफ प्लॉट किए गए। तो एक चीज जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये कि जब फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 होती है, यानी रेजोनेंस वाली कंडीशन, तो रेजोनेंस की कंडीशन पर एट रेजोनेंस डैम्पिंग रेशियो किसी सिस्टम की जितनी कम होगी, ट्रांसमिसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे आप देखें कि रेजोनेंस की स्टेज पे 1% डैम्प्ड सिस्टम के लिए ट्रांसमिसिबिलिटी अराउंड ये जो है 20, 30, 40 है, यानी कि जो ट्रांसमिटेड फोर्स होगी वो एक्चुअल हार्मोनिक फोर्स से 40 टाइम ज्यादा होगी। बट फॉर डैम्पिंग रेशियो ऑफ 5%, अगर आप डैम्पिंग रेशियो उसी सिस्टम की आप किसी तरीके से इंक्रीज कर दें तो रेजोनेंस की स्टेज पर ट्रांसमिसिबिलिटी 40 से कम होकर 10 पे आ जाएगी, और जितनी आप डैम्पिंग रेशियो बढ़ाते जाएंगे ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ frequency ratio, or if frequency ratio is very small, say 0.1 or 0.2, so transmissibility is almost equal to 1, whatever the damping ratio is. और चाहे इसकी वजह क्या है? वजह इसकी है कि जब फ्रीक्वेंसी रेशियो कम होगी, हार्मोनिक फोर्स बहुत स्लोली वेरी करेगा और ऑलमोस्ट एक्ट एज अ स्टैटिक फोर्स, और स्टैटिक फोर्स जो है वो फुल की फुल ट्रांसफर होगी नीचे। अगर कोई मशीन जो है किसी फाउंडेशन पर पड़ी हुई है और उस पे आप कोई आहिस्ता फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में फुल की फुल फोर्स जो है वो नीचे सपोर्ट्स पर ट्रांसफर होगी। Okay, so coming to a problem, we have this elastomeric rubber bearing pad which is provided between bridge pier and the girder above it. So due to moving traffic, a harmonic force P naught act at the top of the bridge, and the peak value of harmonic force is P naught, and Ft naught is the corresponding value of force transmitted at the foundation. अच्छा, यहाँ पर जो पैड्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपने देखा होगा गौर से ये जो ब्रिजेस में जो रबर पैड प्रोवाइड की जाती है कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर्स। एक लेयर नहीं होती सॉलिड, कई लेयर्स होती हैं। कई लेयर्स रखने का मकसद क्या है, वो ये प्रॉब्लम जब आप हम सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या वजह होती है। Anyhow, the stiffness of single layer is 7 giganewton per meter and the damping ratio is 7%. And the mass of bridge deck supporting girder and traffic for this which contribute to this pad is 10 raised to power 7 kg. Now a designer wants to restrict the maximum vertical dynamic force
transmitted to the supporting girder to 15% of the dynamic force produced at the top end of elastomeric bearing pad. How many layers of rubber he or she shall provide? Assume that dynamic force produced due to traffic is represented by this function P naught sine 10 pi, and this has unit of Newton. डिजाइनर जो है वो चाह रहा है कि जो ट्रांसमिटेड फोर्स है ये हार्मोनिक फोर्स के 15% से ज्यादा ना हो, और ये जो हार्मोनिक फोर्स है ये इस मैथमेटिकल फंक्शन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमने अब ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ इलास्टोमेरिक रबर बियरिंग पैड जो है इसमें कितनी लेयर्स हमें रबर्स की प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एनी हाउ जो पीछे हमने जो डेटा हमें दिया है वो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 10 pi radian per second, transmissibility which is the ratio of amplitude of transmitted force divided by amplitude of harmonic force, तो ये 0.15 हम रखना चाह रहे हैं। जीटा हमें गिवन है, आर ओमेगा हमें कैलकुलेट जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें आर जो है कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, इस इक्वेशन में ओनली अननोन इज आर ओमेगा, बट अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं we get a fourth order polynomial equation. So therefore taking r omega square is x, we'll convert this into a quadratic equation, and if we expand and simplify we get this equation, which have of course two roots, 8.17 and minus 5.32. Now negative root have no physical meaning, so the correct answer is 8.17. R omega square is 8.17, so R omega will be 2.86, and R omega is omega by omega n. Omega is 10 pi radian per second. Omega n is total stiffness of the system divided by mass. Mass is given, so we can calculate total stiffness of total stiffness of the system Ke, which comes out to be 1.21 into 10 raised to power 9 Newton meter. Now since the various layers of rubber in the pad actually represents springs connected in series, therefore to find the stiffness of we will use the corresponding value of stiffness. In case of springs connected in series, reciprocal of the total stiffness is equal to reciprocal of stiffness of first spring plus reciprocal of stiffness of second spring, and so on. Since in this case all the springs, all the layers have same stiffness,
So instead of K1, K2, K3, we can use K. So if there are n number of layers in this bed, the summation of the right hand term will be n by k, or n is equal to k by ke. Now k is provided, ke is just calculated, so we can calculate n, which is 5.79, which can be rounded to 6 layers. So in this case, if we provide 6 layers of rubber steel, 6 layers of rubber layers, we can reduce the transmissibility to 0.15. Now, any question, if there is any question you can ask. Okay, coming to another topic, base excitation. Base excitation, by base excitation we mean a system which is excited by some force at the base. Typical example of base excitation are earthquake, which excite the base of structure, the foundation of the structure. Similarly, sometime machines can also excite base of a system. If you are traveling in a vehicle on a rough surface, due to road roughness, base of the vehicle is excited and acceleration, displacement, velocity is produced in the top end. So this is again a typical mass, spring and dashpot system. It is, for example, its base is excited and the base move in the upward direction by displacement ug. And due to this ug, mass at the top end is displaced by ut. Its example in case of a structure can be अगर आप एक सिंगल स्टोरी सिंगल बे फ्रेम कंसिडर करें जिसमें डैम्पिंग को डैश पार्ट से रिप्रेजेंट किया गया हो और इसका ग्राउंड डिस्प्लेस होता है बाय एन अमाउंट यूजी, जो कि अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, किसी नियर बाय मशीन्स की वजह से भी हो सकता है. से अर्थक्वेक ले लें कि ड्यू टू अर्थक्वेक द बेस displaces by an amount ug, and due to this displacement, the structure at the top and displacement displaces by an amount ut. Then the ratio of ut and ug is also known as transmissibility. And fortunately, if we develop an equation, we get same equation. अगर आप इसकी इक्वेशन डेवलप करें, टॉप एंड पर डिस्प्लेसमेंट और ग्राउंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है या बेस पर और उसकी वजह से टॉप एंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी पीक वैल्यूज, तो इससे आपके पास वही इक्वेशन आएगी जो कि हमने पीछे देखी है.
तो ये कुछ मटेरियल है, आप खुद ही देख सकते हैं, कुछ ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. Okay, similarly, sometime a base of a system may be excited due to acceleration. ऐसा हो सकता है कि बल्कि अर्थक्वेक में होता हिस्सा है कि ground is excited by the seismic waves. Ground acceleration is produced, due to which acceleration at the top end of the structural system is produced. अगर ground acceleration UG डबल डॉट हो और उसकी वजह से स्ट्रक्चर के टॉप एंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वो UT डबल डॉट हो, तो UT डबल डॉट और UG डबल डॉट की पीक वैल्यूज की रेशियो को भी ट्रांसमिसिबिलिटी कहा जाता है. And again, if we derive an equation, we get same equation which is used for transmissibility of force and displacement. So this same equation can be used for the transmissibility of force, displacement and acceleration. Coming to effective force concept, एक सिंगल स्टोरी सिंगल बे फ्रेम है जिसकी बेस जो है वो बेस एक्साइटेशन की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है बाय एन अमाउंट यूजी और टॉप एंड डिस्प्लेस हो रहा है बाय एन अमाउंट यूटी. You can see that in this case UT can be written as U plus UG, या आप इसको दो, ये जो UT है इसको दो पोर्शन में स्प्लिट कर सकते हैं. UG which is constant across the height and U which varies across the height. You can see that due to UG no deformation in the structure occur. However, due to U the structure deform and consequently elastic restoring force and damping force are developed. So damping force and elastic restoring force depend upon U because this is related to the deformation, structural deformation, whereas inertial force depends upon total acceleration. So if we develop equation of motion for this case, we have Fs plus Fd plus Fi and there is no external force, so this will be 0. इसमें अगर आप Fi, Fd, Fi, Fd और Fs की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. U डबल डॉट T is equal to UG double dot plus U double dot. इसको आप अगर आप एक्सपेंड करते हैं आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. और अगर आप इसको जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कंपेयर करें तो you can see that P of T can be taken equal to minus MUG double dot T. Therefore, this MUG double dot T is known as effective force. And by using this concept, we can replace a system whose base is moving with
acceleration UG double dot. We can replace this with a stationary structure whose base is stationary, and there is a force acting at the top end whose direction is opposite to that of ground acceleration and whose magnitude is MUG double dot T. अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछें, अगर कोई जाग रहा है क्लास में तो पूछ सकता है. आप लोग वैसे ही खाना पूरी के लिए आ जाते हैं. क्लास लेना न लेना आप लोग के लिए दोनों बराबर है. एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करती है. A water tank which is supported on a hollow circular steel column, and this water tank is subjected to an earthquake which can be represented by this harmonic excitations represented by this equation 0.5 e sine 30, and the unit of acceleration in this case is meter per second square. Weight of the tank is 100,000 pounds and its height is 50 feet.
Now in problem it is asked that design the most economical cross section for the column to withstand earthquake such that neither peak acceleration at the top end of the tank exceed 1g. Now the stress induced in the column exceed the yield strength of the material, which is 30,000 psi. So we have to design the most economical cross-section condition, the economical cross-section for these two conditions. Take small d, that is inner diameter, is equal to 0.9 times capital D, that is outer diameter, and damping ratio of 0.5. Ignore height of tank, LSP delta. So first of all, write all the information using proper notations. From this equation, we can see that P ground acceleration is 0.5 g. UG naught double dot is 0.5 g. And frequency of this acceleration is 30 pi radian per second. Weight of the water tank is 100,000 pounds or 1,000 kips, from which we can calculate the mass. Yield strength 30 kSi. Other information are also shown. So first of all, we need to find the peak value of corresponding effective force acting on this tank. We just derived an equation that effective force is MUG double dot, and UG double dot is represented by UG naught double dot sine omega t. The peak value of PT can be represented by P naught. So इसमें M जो है वो W by G, UG naught double dot is 0.5 G. So we get this equation. The peak value of this force is P naught, which is W by 2. Peak value इसकी कब होगी? जब sin omega t 1 के बराबर होगा. और consequently peak value जो है that will be W by 2. W is 100, so P naught is W by 2, 50K. Now, using the equation for transmissibility, it is given that transmissibility shall not exceed. It is given that acceleration at the top end shall not exceed 1g. It means that transmissibility, which is the ratio of acceleration at the top end divided by acceleration at the bottom, this ratio comes out to be 2, so that the transmissibility shall not exceed 2 in this case. Now we have the value of damping ratio, but we don't have the value of frequency ratio. The only unknown is R omega, and which can be determined by solving this equation. And R omega square from this equation is 1.395. So R omega square shall not be greater than 1.395. Now R omega is omega by omega n. Omega n is m over k. K from this equation can be written as omega square m divided by R omega square, which is 1.395,
K stiffness shall not be less than 1657 kg per inch. Now, in our case, the water tank is an example of cantilever column or cantilever beam. And cantilever column or beam, if loaded at the free end, have a stiffness equal to 3 EI over LQ. So K can be taken as 3 EI over LQ. E is given, H is given, only unknown is I, and which we can find. And the calculation shows that I shall not be less than 4113931 inch raised to power 4. Now, moment of inertia of hollow circular section can be calculated from this equation. Small d is 0.9 d and I is just calculated, so we can calculate the diameter. And this shows that the maximum diameter for a transmissibility of 2 shall not be greater than 124.9 inch. तो एक कंडीशन जो है उसके लिए तो हमने डायमीटर मालूम कर लिया. डिजाइन हमने दो कंडीशन के लिए करना है. ट्रांसमिसिबिलिटी shall not exceed 2 as well as maximum stress in the steel shall not exceed 30 psi. So we will now check the second condition. In this case, the maximum stress at the bottom will be due to axial force, that is the weight, and bending moment produced due to elastic restoring force. Peak equivalent static force. Now, peak equivalent static force is unknown, which is K into U naught. We have the value of K, but we don't know what is the value of U naught. So U naught can be calculated by the equation used to calculate deformation response factor. This equation, all omega and zeta are known. U S T naught is P naught by K. P naught, which was calculated few slides back, is 50 kb. And so and K is 1656, 7 kb per inch, so we can calculate U naught. Once we calculate U naught, we can calculate Fs naught, and then we can calculate M. And now we are in a position to find the maximum stress in this column, which is axial stress plus maximum bending stress. And in this case, the maximum stress is 0.9 psi, which is less than 30 psi. So it is okay, but it is not an economical cross section. An economical cross section will be one in which the full material capability of the section is utilized. So we will go for the second trial and reduce a value of D to 20 inch and perform these calculations. And in this case, now the stress is increased to 1.7 psi. So we need to further reduce the diameter. So after many trials, the solution converged at D is equal to 4.73 inch.
So this lecture is complete. You will have to submit the home assignment by next week. There will also be a quiz in module 5 next week. तो उसके लिए आप तैयार हो जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर कोई जागरूक तो पूछ सकता है। Oh, sir. Thank you, sir. ठीक है, 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So from this lecture and onward, we will discuss earthquake engineering part of this subject. आपका जो सब्जेक्ट है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। तो अभी तक जो हमने मॉड्यूल 5 तक जो पढ़ा है वो स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का पोर्शन था, और अब उसकी एप्लीकेशन टू द अर्थक्वेक इंजीनियरिंग वो हम इस लेक्चर से ऑनवर्ड जो है हम डिस्कस करेंगे। In this module, we will discuss the response of linear elastic single degree of freedom system when these are subjected to earthquake loading. So as all of you know that elastic system is one which come back to its original position when the action is removed, and linear elastic is one in which the force and displacement varies linearly. In this lecture we will discuss the response of linear elastic single degree of freedom system to earthquake loading. In next lecture we will discuss the response of inelastic single degree of freedom system to earthquake loading. So as I just discussed that an elastic system is one linear elastic system is one which come back to its original position when the applied action is removed. A system may be elastic, but sometimes it may not be linear elastic. For example, this system is also elastic, but the force displacement curve is not linear. This is non-linear elastic system. And in next lecture we will discuss inelastic system. Inelastic systems are one which
in which if force is removed, force or action is removed, permanent deformation in the structure occur, which may be more or less depending upon the level of loading and the material properties. So we have already discussed effective force or effective earthquake force. So coming to the seismology, some basic seismology. The strong motion, the topic is strong motion record. So you have studied in seismology that a strong motion is one in which the ground accelerations are significant. There is no threshold value, but we can say that the ground acceleration is at least around 0.05 g. Whether a record is strong motion record or simple record, in all the that there are two types of waves which propagates after earthquake. One is P wave or primary wave, and second one is S waves or secondary waves. P waves have a higher velocity, so these are first noted on the instruments which are used for recording the earthquake data, which are known as seismographs, and the graph paper on which the data is recorded is known as seismogram. So as you know, P waves have highest velocity, so it is first recorded, then PP wave, then S waves, then SS waves, and then finally L waves, which are more destructive and responsible for damages in earthquake. And different ground motions have different characteristics. Here some notable ground motions recorded during various earthquakes is reproduced. The first one is recorded during 1940 Imperial Valley earthquake. Since it was recorded at the location El Centro, so that ground motion record is known as El Centro 1940 ground motion. Similarly, Parkfield 1966, etc. So you can see that the shapes, different earthquakes have different shapes, different peaks, different durations. So every earthquake have its own characteristics. In these graphs, on x-axis we have time and on y-axis we have ground accelerations. The accelerogram, that is the graph between ground acceleration and the time, that will be used in this lecture is throughout these lectures will be El Centro 1940 strong ground motion record. In 1940 an earthquake occurred at Imperial Valley, which was recorded at El Centro, and that ground motion record will be used in these lectures and in most of the books on earthquake engineering. That El Centro earthquake is recorded.
one of the reason for using this record is this record have a lot of this record have waves with different frequencies. ये जो रिकॉर्ड था इसमें मीडियम फ्रीक्वेंसी की वेव्स भी थी, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी की भी वेव्स थी और लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स भी थी, मीडियम भी थी। तो इस लिहाजा इसको जो है ऐसा किस्म का अर्थक्वेक जो है उसका डैमेजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और ज्यादा स्ट्रक्चर को मुतासिर कर सकता है। फॉर दैट रीजन हम जो है एल सेंट्रो 1940 ग्राउंड मोशन रिकॉर्ड यूज करेंगे। जो सेकेंड ग्राफ है आप देख सकते हैं, दिस इज बिटवीन ग्राउंड वेलोसिटी एंड टाइम। और ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये पिछले ग्राफ को डिजिटाइज करके जो वैल्यूज ली गई हैं उसकी फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया। फिर इस डेटा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से हमारे पास ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ जो है वो आया। So now coming to the equation of motion for single degree of freedom system subjected to earthquake excitation. So consider a single degree of freedom system which is subjected to ground displacement UG. Consequently, the structure at the mass level is subjected to a displacement UT. In this case, we discussed in previous lecture that in case of base excitation, the equation of motion have this form, which can be simplified and rewritten in this form. Now, since zeta is equal to C by CCR, or C equal to zeta into CCR, and CCR is 2m omega n, so we can substitute these values in this equation and finally we get this equation. With the help of this equation, if we have a ground acceleration at particular instant of time, we can solve this equation of motion to find the displacement in the structure. So this is the equation of motion which is used for linear elastic single degree of freedom system subjected to earthquake excitations. And as I told you that इस केस में हम जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने जो है तो जो क्लासिकल इंटीग्रेशन मेथड है वो यूज किया है, लेकिन अर्थक्वेक डेटा के केस में आप क्लासिकल इंटीग्रेशन मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो वाइब्रेशन है वो रैंडम है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा नहीं है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर सके। अब नॉर्मली जो है एक अर्थक्वेक है वो 1 सेकेंड, आजकल जो हमारे पास जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 1 सेकेंड में 30 से 60 रीडिंग, 50 से 100 रीडिंग जो है वो रिकॉर्ड करती है। तो एक 30 सेकेंड का भी अर्थक्वेक हो और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो 1 सेकेंड में 50 रीडिंग रिकॉर्ड करता हो तो 30 सेकेंड में 1500 रीडिंग रिकॉर्ड करेगा। ये आपके पास 1500 ग्राउंड एक्सेलरेशंस की वैल्यूज आ जाएंगी और 1500 टाइम्स क्लासिकल इंटीग्रेशन से इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना जो है वो काफी लेबोरियस काम है। तो इसलिए इस पर्पस के लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जिसमें अगर कंप्यूटेशनल एफर्ट बढ़ जाती है लेकिन
उसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल में छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, रिस्पांस क्वांटिटीज। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, रिस्पांस इज अ जनरल टर्म which can be used to describe structural displacement, structural velocity, structural acceleration, internal force, and it can be defined as response is the structural system reaction to a demand coming from ground acceleration regard. So response can be any term which shows this demand in terms of this structural displacement, velocity, acceleration, etc. अच्छा, बाज़ औक़ात एक रिस्पांस क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कोई एक रिस्पांस क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करना हमारा मकसद होगा। बाज़ औक़ात किसी दूसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना जो है वो डिजाइनर का जो ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मालूम करना चाहें, यू वांट टू फाइंड व्हाट शैल बी द मिनिमम distance between these two. For example, this structure is already constructed and you want to construct this structure. So you should know what shall be the minimum distance between these two structures. Because if the distance between these two structures is less than the required, what will happen? These two structures can collide during the earthquake. As you can see, these two structures collided, and one story of this structure is completely vanished. So in order to calculate minimum distance between these two structures, we need to find U naught T. Sometime we may need, most of the time we may need U, structural displacement. As we have discussed, that total displacement can be divided into two parts: ground displacement plus structural displacement. Most of the time we are interested in this structural displacement, because in the slides to come you will see that in order to develop response spectra or design spectra, we need structural displacement. Now, how this structural displacement is determined? First of all, you need to have the earthquake record for which you need to find structural displacement. For example, this is a structure with a natural time period of 0.5 seconds, damping ratio of 2%, and we want to find the maximum structural displacement when this structure is subjected to El Centro 1940 ground acceleration, which had a peak ground acceleration of 0.319. For that purpose, as I told, we will perform numerical integration, which is not possible without powerful computer. And if we develop software or we use an already developed software, we can find the variation of structural displacement with time, which is shown here. So this shows
that for this structure with this characteristics and subjected to El Centro 1940 earthquake, the displacement time variation of the structural system will be this, and in this the peak structural displacement is 2.67 inch. So the next topic is what is the influence of natural time period and damping ratio on peak structural displacement U0. So as you have seen here in this equation of motion, you can see that the if we solve this equation of motion, we will get displacement, and you can see that this depends upon zeta as well as omega n. Omega n can be related to Tn, so you can say that structural displacement depends upon zeta and Tn. For that purpose, what we have done, we applied El Centro 1940 ground motion to three structures, three single degree of freedom systems. All have a damping ratio of 2%. The first one was having a time period of 0.5 seconds. The second one have a time period of 1 second, and third one have a time period of 2 seconds. And we performed numerical integration, which shows that in case of natural time period 0.5 second, the peak structural displacement is 2.67. In case of 1 second natural time period, this increased to 5.97. Further increasing the natural time period, further increase the peak structural displacement. So what we can conclude from here is that increase in natural time period increase the peak structural displacement. Similarly, in order to study the effect of damping ratio on peak displacement, again we took three different single degree of freedom system, but now the damping ratio was waived and the natural time period was kept constant. So in this case, all these are the displacement time history of three single degree of freedom system. All had a natural time period of 2 seconds. The first one is undamped, the second one has a damping ratio of 0.02, and the third one is a damping ratio of 0.05. So what you can see is by increase in damping ratio, you can see that the peak structural displacement reduces. In case of undamped system, the peak displacement is maximum. In case of highest damping ratio, the peak structural displacements are minimum. So what we can conclude from these graphs, that increase in damping ratio reduces the peak structural displacements. तो चले, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी होगा।